We have talked about effective rate of interest. When we said that a rate when applied more than once in a year, the nominal annual rate of interest becomes effectively higher. And hence we devised a formula, we talked about that converts a nominal rate of interest into an effective rate of interest. और उसमें हमने ये देखा था कि अगर कंपाउंडिंग पीरियड्स ज़्यादा होते चले जाएं, यानी हम मंथली और वीकली कंपाउंडिंग तक अगर चले जाएं, तो हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मज़ीद बढ़ता चला जाता है. What if we want to apply a certain nominal rate of interest for a shorter period and we want to keep its effectiveness the same? यानी अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट लेट्स से 10% को क्वार्टरली अप्लाई करूँ, यानी हर 3 महीने के बाद अप्लाई करूँ, लेकिन इसकी इफेक्टिवनेस में इजाफा ना हो, यानी ये मुझे वही फ्यूचर वैल्यू दे जो कि नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे देता है. सो इज इट पॉसिबल? कैन आई डू दैट? Yes, it is possible, and such a rate is called equivalent rate of interest. यानी equivalent rate of interest क्या है? वो rate of interest कि उसे annual अप्लाई किया जाए तब भी उसकी इफेक्टिवनेस वही होगी, और अगर उसे क्वार्टरली या मंथली या सेमी एनुअली अप्लाई किया जाए तो तब भी उसकी इफेक्टिवनेस के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर हम ये कहें जो कि जनरली हमारे एक आम आदमी में जहन में आएगा, दैट इफ आई वांट टू कन्वर्ट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम एनुअल टू लेट्स से सेमी एनुअल, तो मुझे उसको कैसे उस रेट को एडजस्ट करने की ज़रूरत है. सो अ सिंपल वे टू डू इट इसके, क्योंकि एक साल में दो सेमी एनुअल पीरियड्स होते हैं, तो उस रेट को 2 से डिवाइड कर दिया जाए तो मेरे पास इक्वलेंट सेमी एनुअल रेट आ जाएगा, या फॉर दैट मैटर 4 से डिवाइड कर दिया जाए तो एक क्वार्टरली इक्वलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा. Unfortunately, this is not correct. I mean, by simply dividing with the number of compounding periods, the nominal annual rate of interest, we'll not get the correct equivalent rate of interest. And for that, like the effective rate of interest, we also have a formula. This formula helps us to convert an annual rate of interest, and for that matter, any rate of interest given for any period of time, into another equivalent rate of interest for a different period of time. यानी एक एनुअल रेट को मैं इक्वलेंट सेमी एनुअल रेट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, और क्वार्टरली रेट में, मंथली, वीकली, किसी भी रेट में मैं इस फॉर्मूले के ज़रिए उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ. इक्वलेंट रेट वो कब होगा? जब क्वार्टरली रेट की एप्लीकेशन भी मुझे वही फ्यूचर वैल्यू दे रही होगी जो एनुअल रेट की एप्लीकेशन मुझे फ्यूचर वैल्यू दे रही है. इसकी एप्लीकेशन प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर बहुत सारी हैं, जहाँ पर हम अपने कस्टमर्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो रेट बताते हैं वो एनुअल रेट होता है, बट देन दे अप्लाई इट ऑन क्वार्टरली और monthly basis. Now let's have a look at this formula. The equivalent rate formula is 1 plus r raised to the power 1 over n minus 1 multiplied by 100, where r is the nominal rate of interest. हमने ये बात पहले की थी कि वो rate of interest जिसको किसी चीज़ के लिए एडजस्ट नहीं किया गया, that is called nominal rate of interest. And n is the number of compounding periods in 1 year, provided that the rate of interest that needs to be converted, यानी जो nominal rate of interest हमें दिया गया है, अगर वो annual है तो उस केस के अंदर हम n को डिफाइन करेंगे कि n is the number of compounding periods in a year. यानी अगर हम क्वार्टरली कंपाउंडिंग पे जा रहे हैं तो n की वैल्यू 4 हो जाएगी, मंथली पे जा रहे हैं तो 12 हो जाएगी, और इसी तरीके से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट शॉर्टर पीरियड्स के ऊपर. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट
with reference to an example. Suppose again we have got 12% per annum nominal rate of interest and we want to convert it into quarterly equivalent rate of interest. मैं फिर इस बात को दोहराना चाहूँगा कि ये जो क्वार्टरली इक्वलेंट रेट हमारे पास आएगा इसको हम इक्वलेंट रेट क्यों कहेंगे? क्योंकि ये रेट एक साल के बाद हमें वही फ्यूचर वैल्यू देगा जो कि नॉमिनल रेट हमें एक साल के बाद देगा. Let's have a look at the formula and put in the values. R की वैल्यू 12% है and because we are going for quarterly compounding तो एक साल में 4 क्वार्टर्स होने की वजह से n की वैल्यू 4 आ जाएगी. Now when you will solve this expression using a calculator, you will end up with an equivalent rate of 2.8737. Now if we compare it with the rate that if we would have divided 12% by 4, the answer would have been 3. यानी अगर 12 को हम 4 क्वार्टर से डिवाइड कर देते तो हमारे पास आंसर 3% आता, लेकिन यहाँ पर हमारे पास आंसर 2.8737% आ रहा है. यानी ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सिंपल डिवीजन से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास आ रहा था उससे कम है. सो इक्वलेंट रेट will always be less than that percentage rate that you will get by simply dividing it with the number of compounding periods. Now, this example helps us to calculate the value of a certain amount in the future applying the equivalent rate calculated using the formula or without calculating the formula. Now, if you have a look at the calculations, you would see that 1000 rupees at the rate of 12% after 3 years is equal to 1404.92. This is annual compounding. And the same amount, which is then compounded for 3 years with a quarterly rate or power 12 इसलिए ली गई है क्योंकि 3 सालों में 12 quarters होंगे and we get the exact same value 1404.92. और आखिरी लाइन में हम ये देखते हैं कि अगर 2.87 की जगह 3% रेट लिया जाता जो कि गलत होगा तो हमारे पास आंसर 1425.76 आता है जो कि उससे ज़्यादा है जो हमारे पास इक्विवेलेंट रेट देता है. तो ये कैलकुलेशन इस बात को प्रूफ करती है कि किस तरह इक्विवेलेंट रेट हमें वही फ्यूचर वैल्यू देता है जो कि नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमारे पास आती है.